My dear students, myself Krishnandra Swai, Assistant Professor of Political Science, Shaulawala Women's Higher Secondary School, Cuttack. Today, we shall discuss Part B of Unit 4. Your topic is Contemporary World Politics, and in it you find India in world politics, India's foreign policy, basic features, India and its neighbors, China and Pakistan. And today, we shall discuss the concept that is basic feature of India's foreign policy before we discuss India-China relationship and India-Pakistan relationship in subsequent classes. Coming to the topic, you have importance of foreign policy for a nation. वैदेशिक नीति जहाँ को आमे कहू तार राष्ट्र प्रति गुरुत्व कौन बा काहे कि राष्ट्र वैदेशिक नीति रे निजकू आरंभ करे निजर व्यवस्था संयोजित करे. नो स्टेट हाउसएवर बिग और पावरफुल कैन अफोर्ड टू मीट ऑल इट्स नीड्स. कौनसी राष्ट्र जेते बड़ बा क्षमता संपन्न हेउथाउ ताहा निजर समस्त आवश्यकता पूरण करि पारे नाही. तेणु राष्ट्र अन्य राष्ट्र सहित मिसी चलिबा पई निजर किछि आवश्यकता मेंटाइबा पई वैदेशिक नीति को आपणैबा यथार्थ मन हुए. Each state has to depend upon others for securing its several needs and interests. This compels each nation to have a social, economic, political and cultural relations with other nations. So, there are the spheres, the areas like social cooperation, economic cooperation, political exchange as well as cultural relations, which are found between or among nations while maintaining their foreign relationship, because no nation can live in isolation in modern concept of globalization. Even much before globalization, we have to have relationship with other nations for existence as well as peaceful coexistence. And there are some global necessities like fulfilling the objectives of world peace, विश्व शांतिर लक्ष्य पूरण उद्देश्य रे, सिक्यूरिटी अगेंस्ट वार एवं युद्ध विरुद्ध रे प्रत्येक नागरिकों को व्यक्ति को सुरक्षा दबा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन परिवेशर सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार सुरक्षा एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम टेररिज्म, बिकॉज टेररिज्म इज द स्कॉर्ज ऑफ वार. एंड वी हैव नोटिस्ड हाउ the modern concept of terrorism is all pervasive, and on 14th August this month with the takeover of Taliban in Afghanistan, how the entire world public opinion is rife against Taliban, because it is a kind of fundamentalistic force that is wreaking havoc on the civilians, and most of the people are fleeing the land, homeland, Taliban, in fear of this persecution by the rulers, that is Taliban rulers. So, this is what is terrorism, and which has made the necessity of foreign policy for a nation. It can be bilateral. वस्तुतः आमर वैदेशिक नीति गोटे राष्ट्रर अन्य राष्ट्र सहित होई पारे बा बहुराष्ट्रीय बा मल्टीलैटरल होई पारे. And so, India as a sovereign state has been maintaining its foreign policy relations among many nations of the world. तेणु भारत मध्य सेति मध्यरु अन्यतम राष्ट्र अटे जहाँ अन्य राष्ट्र गुड़िक सहित वैदेशिक संपर्क स्थापन करिछि. And what is foreign policy? वैदेशिक नीति कौन? Foreign policy can be said as a set of principles, decisions and methods that a nation adopts for securing its national interest in relation to other nations. तेणु वैदेशिक नीति कहले आमे बुझू बा कुहा जाई पारे एहा केते गुड़िए मौलिक नीति, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, डिसीजंस जहाँ सरकार निर्णय करती बा मेथड्स बा प्रणाली गोटे राष्ट्र ताको आडप्ट करे, ग्रहण करे फॉर सिक्योरिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, यार जातीय स्वार्थ को पाइबा उद्देश्य. द वेरी वाइटल, वेरी क्रुशियल एलिमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज the protection of national interest, and it can never be compromised at any cost. As Lord Palmerston said that nations can never compromise with its national interest. There are no permanent friend or foes found in international relations, only permanent interest that counts.
it is the observation of Lord Palmerston. And second one is foreign policy may be like a wedding ring with which the domestic context of a nation solemnizes its union with international community. So, here we find the enmeshing, the coupling or the addition of domestic interest with that of international environment or community. When we correlate, we add domestic interest with international environment, then we find some relaxation, some benefits, and such political marriage ei rajanaitik vivah is underlined by the ambitions आर मध्य लक्ष्य रही गोल रही desires of the state, and hence foreign policy is a means to an end of for the states. तेणु राष्ट्रर यह गोटे लक्ष्य, it is a means to an end, it is not the ultimate end. There are many ends fixed for a nation, and foreign policy happens to be one of the end of state. Foreign policy is a plan or program of actions of a state which determines the sum total of the state's objectives in international system. आंतर्जातिक व्यवस्था रे राष्ट्रर कार्य लक्ष्य ये सबको जहाँ निर्धारण करे ताको आमे वैदेशिक नीति मध्य कहि थाउ. Then coming to definition, Norman Hill defines foreign policy is a substance of nations' efforts to promote its interest vis-a-vis other nations. Norman Hill कहउचंती जे वैदेशिक नीतिटी कौन, इट इज ए सब्सटेंस ऑफ नेशंस इफर्ट्स, राष्ट्रर प्रचेष्टार यह हेउची एक सब्सटेंस बा गोल बा लक्ष्य जार उद्देश्य कौन, टू प्रमोट द इंटरेस्ट vis-a-vis अदर नेशंस, राष्ट्रीय स्वार्थर सुरक्षा रखी अन्य राष्ट्र सहित तार संपर्क को बलवत्तर रखिबा. Hartman says that foreign policy is systematic statement of deliberately selected national interest. राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट भावे स्थिरीकृत जातीय स्वार्थ को जेतेबेले आमे सिस्टमैटिकली विधिबद्ध भावे आमे प्रकाश करू ताहाको आमे वैदेशिक नीति को. भारत अमेरिका सहित की प्रकार संपर्क रखिबो, सप्ताह तलर तालिबान सरकार गठन परे अफगानिस्तान सहित भारत की संपर्क रखिबो, भारत ताहा विचार करिवो एवं एई होची भारतर गोटे जातीय स्वार्थ एवं डेलिबरेटली द पॉलिसी मेकर हैज टू बियर इन माइंड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशन वी आर कंटेम्पलेटिंग टू हैव विथ अदर नेशंस vis-a-vis द डेवलपमेंट्स. Cecil and Crabb define that foreign policy consists of two elements. यह दुईटी उपादान रे गठित. One is national objective, गोटे होची जातीय स्वार्थ बा लक्ष्य टू बी अचीव्ड जहाकू राष्ट्र निश्चिंत पाइबा पई चेष्टा करिवो, प्रयास करिवो, एंड मीन्स फॉर अचीविंग दिज आकू पाइबा पई जो प्रयत्न करा जाए, जो चेष्टा करा जाए, जो उपाय अवलंबन करा जाए ताहा मध्य राष्ट्र प्रयास करिवो. तेणु केमिति आमे व्हाट आर द गोल्स सेट फॉर इंडिया एंड हाउ दीज गोल्स आर टू बी अचीव्ड, एंड दैट इज द एरिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी. देन डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, एई वैदेशिक नीतिर विभिन्न उपादान गुड़िक कौन. फास्ट इज हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, गोटे राष्ट्र तार इतिहास एवं तार ट्रेडिशन परंपरा को नहीं बंची थाए. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सेज नेहरू emerges from its own tradition, urges and objectives and more particularly from its recent past. भारत तार गौरवबह बा गौरवमय ट्रेडिशन रु तार राष्ट्रीय नीति एवं वैदेशिक नीति प्रणयन करिथाय. तेणु कौनसी राष्ट्र ता परंपरा तार इतिहास को छाड़ी बंची पारे नाही. तेणु भारत एवं अन्यान्य राष्ट्र जेतेबेले वैदेशिक नीति प्रणयन करुचंती तांकर निजस्व इतिहास, निजस्व परंपरा को दृष्टि रखी वैदेशिक नीति करिथांती. फैक्टर्स लाइक वैल्यूज आइडियल्स ऑफ नेशन मैटर इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, गोटे राष्ट्रर मूल्यबोध आदर्श. भारतर राष्ट्रीय मूल्यबोध कहिले वी लुक विविडली ऑन टेलीविजन अतिथि देवो भव एवं वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड फ्राटर्निटी जहाँ लेस्ली लिप्सन कहते. तेणु भारत से विश्वास करे. तेणु आमको आम आगरे जी आसूची विदेशागत अतिथि सी आमर देव बा भगवान सदृश. तेणु यही धारणा एक भारतीय मूल्यबोध. अन्य राष्ट्र हुए तो थाई पारे न थाई पारे. दीज आर ओरिएंटल वैल्यूज दैट वी बोस्ट
having such values because we are Indians, we are having a rich tradition heritage. So, these are reflected in our foreign policy. Domestic factors like geography, size, location, topography play a significant role in shaping foreign policy of state. एतद् व्यतीत आमर देश भितर थिबा उपादान गुड़िक यथा राष्ट्रर भूगोल भूभाग भारतर वैदेशिक नीति कला बेले भारतर वैदेशिक नीति प्रणयक माने दृष्टि रखती भारत आमर दक्षिण दिगरे दक्षिण पूर्व दिगरे एवं पूर्व दिगरे महासागर तीनोटी इंडियन ओशन अरेबियन ओशन एंड बे ऑफ बेंगल रही उत्तर दिगरे हिमालय रही तेणु दीज आर द टोपोग्राफी जियोग्राफी यही कंडीशन को रखी भारतर वैदेशिक नीति प्रणयन करा जाई थाए सेही भली लोकेशन व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक लोकेशन दैट इंडिया इज हैविंग भारत whether it is vulnerable for foreign attack or not. Once we are boasting that Himalaya is impregnable, आमे भाबुतिले सेतेबेले जे हिमालय होउची अलंघ्य ताकू केही लंघी पारिबेनी. Now with the advanced arms ammunition sophisticated of weapons we can even fly over the mighty Himalaya. So here we have to bear in mind what are our strategies, what we shall do to protect our frontiers. So these are geography, size, location, topography, they play a very vital role, very crucial role while framing or determining one's foreign policy. And other factors like economic and military strength of a nation, गोटे राष्ट्र अर्थनीतिक एवं सामरिक सामर्थ्य, economical development and military capability. If India is today a very powerful country in South Asia, it is because of a very developing economy that we are having. But earlier 50 years back our economical system was very poor and we are poised to be a developed nation by 2025 2025 आड़कू आमर पॉलिसी मेकर माने इकोनोमिस्ट माने चिंता करूचंती भारत को एक विकसित राष्ट्र करिबा पाई. We are on the path of development, we are not a developed state. So we have to enhance our economic capability, we have to alleviate poverty, we have to be economically viable, self-sufficient, and similarly the military strength, because we are flanked by, surrounded by hostile neighbors. You have China, you have Pakistan, another Afghanistan is also a threat. Taliban Afghanistan is a threat to this Pak occupied Kashmir because it is having some strength, some liaison with Pakistan. Therefore, we have to build up our military strength in the face of the development of arms and ammunitions among the neighboring countries surrounding us. So these are the two areas. And other domestic and international environment like American diplomat George F. Kennan, who holds the view that foreign policy like many other things begin at home and it is an extension of domestic policy. यह आमर राष्ट्रर आभ्यंतरीण पॉलिसी रो गोटे संप्रसारण मात्र which is inseparably linked with foreign policy. तेणु राष्ट्रर आभ्यंतरीण बा आभ्यंतर नीति बाह्यांतर नीति सहित मध्य किछि सामंजस्य बा संपर्क रखुची. द इश्यूज लाइक बाइपोलारिटी जेतेबेले सोवियत रूसिया अमेरिकार विवाद चली एट द हाइट ऑफ कोल्ड वार बा शीतल युद्ध समय 1917 अक्टोबर मासरू ग्रेट अक्टोबर रेवोल्यूशन रशिया जेतेबेले लेनिन को नेतृत्व में बल्सेविक रशिया रेवोल्यूशन आसुची ता परे परे अमेरिका रूसिया भितर कोल्ड वार आरंभ हो जाउची शीतल युद्ध एवं एंटायर वर्ल्ड बिकेम बाइपोलार. वन इज सपोर्टेड बाय the capitalist nations, other one is supported by the ideology of communism or socialism. And as many as 65 European, Eastern European states came under the leadership of Russia, and world instead of remaining multipolar became bipolar, one headed by the United States of America with other allied supporters, those who supported America and capitalism, and other was USSR, Union of Soviet Socialist Republic, formerly Russia, that was there with other Eastern European nations. So world became bipolar. Nowadays we find never a bipolar world because Russia is disintegrated from 1991. So world today can be called either unipolar or multipolar as the case may be. Then
the issues like north south divide. This is another pertinent question, because when we talk of north south divide, we mean the northern nations belong to the developed nations category, whereas the south nations belong to these developing states category like Afro-Asian, Latin American countries or continents, the countries belonging to Afro-Asian, Latin American continents. These countries are called the developing states. So, they are called the south. So, when we talk north south divide, we distinguish between the rich versus the poor nations of the world. Then terrorism, आतंकवाद व सन्त्रासवाद, weapons of mass destruction, गण विध्वस्तकारी अस्त्र शस्त्र and disarmament matter most in it. एवं अस्त्र निरोध बा अस्त्र विरत करिबा, पृथ्वी को अस्त्र शून्य करिबा, ये गोटे बड़ गुरुत्व कथा. कारण when entire world under bipolarity got fully armed, nuclear arms race was there. By 1962 we find Cuban missile crisis. Both Russia and America just were waiting eyeball to strike the nuclear weapon. It was the able leadership of John Kennedy, the American president, and Khrushchev of Russia that could save the world from the brink of second nuclear world war. So, here we have to go for disarming or अस्त्र कमई दबा, आर्म कमई दबा. तेणु पृथ्वीर गोटे बड़ समस्या वर्तमान जो राष्ट्रगुड़िक पाखे अणु अस्त्र रही, अन्यान्य गण विध्वस्तकारी अस्त्र रही, ताकू केमिति आमे कमेइबा. जोउतिपाई आमे इतिहास रे देखिचे सल्ट 1 सल्ट 2 ट्रिटी हेइची, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 ट्रिटी हेइची, बहुत किछि योजना हेइची एवं कालक्रमे मध्य अन्यान्य राष्ट्र मध्य पारमाणविक शक्ति रे विकास पई योजना रखिचंती. Determinants of foreign policy, here personal and political factors. In the words of J.K. Galbraith, another American scholar, he says foreign policy like domestic policy is a reflection of fundamental instincts of those who make it. Evan India's foreign policy has been greatly influenced under the leadership of Pandit Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, K.V. Krishna Menon, K.M. Panikkar, Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi and Ajit Doval. So, they are the people who are responsible for giving a new thrust, new area to India's foreign policy, because they are able leadership, they are wit, they are sagacity, their political acumen has landed India in a higher altitude. Then basic features of India's foreign policy. Article 51 of Indian Constitution says or emphasizes on the foreign policy statement of India. In addition to maintaining just and honorable relations, राष्ट्र सहित ठीक संपर्क एवं बंधुत्वपूर्ण संपर्क रखिबा सहित अन्य राष्ट्र एवं दूरांत राष्ट्र सहित पड़ोसी राष्ट्र सहित उत्तम बंधुत्वपूर्ण संपर्क रखिबा. इंडिया इज ऑल्सो एन अभाउड सपोर्टर ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस. आंतर्जातिक शांति सपक्ष भारत रही. गुडविल, सुसंपर्क, फ्रेंडली रिलेशंस, बंधुत्वपूर्ण संपर्क अन्यान्य राष्ट्र सहित. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 51 of Indian Constitution. And second feature of India's foreign policy is non-alignment. गोटे गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन जेतेबेले पृथ्वी अमेरिका रूसिया मध्य विवाद को देखुची, शीतल युद्ध आरंभ हो जाइछि. आमर भारत रु पंडित नेहरू, युगोस्लोवियार राष्ट्रपति मार्शल टिटो एवं इजिप्टर राष्ट्रपति अब्दुल गामेल नासेर, ए तीन जन, जड़े आफ्रिकीय राष्ट्र नेता, जड़े यूरोपीय राष्ट्र नेता, जड़े एशिया राष्ट्र नेता, तीन जन विचार कले आमे रशिया सहित बंधुत्व स्थापन करिबु नाही कि अमेरिका को मध्य समर्थन करिबु नाही. एट द हाइट ऑफ कोल्ड वार, दिस ट्रियो और थ्री लीडर्स डिसाइडेड टू फ्लोट ए थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक, तृतीय विश्वर राष्ट्र मानंकु नहीं गोटे स्वतंत्र गोष्ठी करिबा. एवं से गोष्ठी ना रहिला निरपेक्ष गोष्ठी. यह अमेरिकार सापेक्ष नुहे कि रशियार नुहे. एवं 1961 मसीह
ता पूर्व गोटे आफ्रो एशियान कॉन्फ्रेंस होता 1954 रे इंडोनेशिया रे एवं तार संकल्प क्रमे आमर मार्शल टिटो अब्दुल गामेल नासेर नेहरू 1961 मसीह जुगोस्लोवियार राजधानी बेलग्रेड ठारे प्रथम नाम शिखर सम्मेलनी है एंड इट वाज कॉल्ड ए थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक तृतीय विश्वर राष्ट्र समूह को नहीं गोटे बड़ संस्था गठित होला जार ना थिला गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन एवं यह एकदा 119 टी राष्ट्र को नहीं एते बड़ संस्था होइथिला जेहेतु शीतल युद्धर अवसान घटिला आज नॉन अलाइंड मूवमेंट बा नाम तार गुरुत्व हरई बसीची किंतु जो उन्नति करी जाइथिला द्वितीय विश्वयुद्ध परठारु एवं जे पर्यंत 1991 पर्यंत रशियार डिसइंटीग्रेशन न होइतिला से पर्यंत नाम रो भूमिका बा नॉन अलाइंड मूवमेंट रो भूमिका पृथ्वी रे बहुत गुरुत्व बहन करुथिला सो इट वाज द नाम और नॉन अलाइंड मूवमेंट व्हिच became the founding stone of the third world countries foreign policies because all the third world countries almost they experience the same kind of imperialism colonialism because they were once upon a time being ruled by either England or Spain or Portugal or any other colonizing nations. So that was their fate. And next is opposition to colonialism, imperialism and neo-colonialism. And foreign policy of India or the basic feature is India is opposed to colonialism because we were the victims of the British rule. If we go to the southern India, Pondicherry came under the spell of this French colony. France सेठी उपनिवेशवाद कला भारतर प्रथम कॉलोनी इंग्लैंड आरंभ करुच्ची 1604 मसीह जॉब चेरनक फाउंडेड कालकाटा सिटी एवं तापर ठारू ईस्ट इंडिया कंपनी आसी भारत में राजूति कला 1957 मसीहा सिपाही विद्रोह आरंभ होउची 1958 मसीह डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कंट्रोल को पड़े आसुची भारत सो अंटिल 1957 वी वर colonized and from 1857 and from 1858 we came under the British imperialism. The difference between colonialism and imperialism is that while colonialism stands for the trade, occupation, imperialism means the direct control, the ruling power of nation over another nation situated in foreign land. And India just standing 7,000 miles away from Great Britain was ruled by Her Majesty's government sitting at London, and we were ruled by the Britishers from 1858 till 1947, the dawn of independence. So India, since it was a victim, so it also opposed colonialism of any kind because most of the Afro-Asian Latin American countries were colonized and imperialism was also there, British imperialism and other countries imperial forces were there. And another concept is the neo-colonialism, Nava Upaniveshavad. The colonialism is gone. पृथ्वी आउ कोटी वर्तमान कॉलोनी नहीं. The last colony of the world was Hong Kong, which was liberated in 1996, 1960 मसीहा 1960 June. It was part of mainland China and last Governor General of Hong Kong was Chris Patten. एवं ता पूर्व साउथ आफ्रिका कॉलोनियलिज्म जाइछि एवं कला गोरा भेदभाव उठिछि तेणु कॉलोनियलिज्म आउ पृथ्वी रे कोउटी नाही किंतु सेमानंकर आदब कायदा ढांचा भावना आम मुंडे रे भरी रही. The Britishers are no longer here in India to rule us, but they have left their impressions on us. We Indians very much imitate their values, and that imitation, that emulation of those values of those states is known as the neo-colonialism. सेमाने चली गले किंतु तांकर भूत आम मुंडे वर्तमान पर्यंत बसा बांधी. So that is neo-colonialism. In other words, we
today live in an era of globalization or corporatization, corporatocracy or corporate culture. We say it. We very much prefer, as village people, we very much prefer the continental dish, the American values, because of the mentality, that is neo-colonial mentality. So, this is another unseen force which influence our culture, and they are to be opposed, and India also opposes to it. Coming to other determinants, opposed to racial discrimination, गोटे वर्ण विद्वेष नीति जहाँ साउथ आफ्रिका रे नेल्सन रोलिला मैंडेला फ्रॉम 1963 टू 1990 27 वर्ष रोबेन आइलैंड रे रहिले कला गोरा भेदभाव वैषम्य दूर करने एवं सी साउथ आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति बा ब्लैक आफ्रिकान प्रेसिडेंट हेले एवं लास्ट साउथ आफ्रिकान गोरा राष्ट्रपति थिले FWD क्लार्क तांकू हटेइकिरी सी राष्ट्रपति हेले फर्स्ट एवर ब्लैक आफ्रिकान प्रेसिडेंट एवं अमेरिका रे जेमती वर्ण वैषम्य नीति चलीथिला मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही वाज लीडिंग द मूवमेंट हिज फेमस स्पीच वाज आई हैव ए ड्रीम एंड जॉन फिट्जगेराल्ड केनेडी दी देन अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रॉम 1960 to 64 supported the cause of black Americans or colored people as they are called in America, and as a matter of fact due to the resurgent leadership of Martin Luther King Jr., the black Americans were liberated and they were given due rights in American Constitution, and that was apartheid policy or वर्ण वैषम्य नीति तार उच्छेद होइछि। तेणु एथिरे भारत मध्य ताकू दृढ़ समर्थन करे। ऑपोजिशन टू ऑल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज एंड ट्रीटीज, भारतर आउ गोटे वैशिष्ट्य होउछि वैदेशिक नीतिर समस्त प्रकार जो सनंद बा चुक्ति बा ट्रीटी जहाँ आमर वैषम्य सृष्टि करुच्ची, वैषम्य सृष्टिकारी चुक्ति गुड़ी को आंतर्जातिक चुक्तिनामा को भारत दृढ़ हस्तर विरोध करे। इन द डेज ऑफ यूनिपोलारिज्म ऑफ पोस्ट 1991 years involving the presence of single superpower and its allied bloc, India effectively opposed such attempts. तेणु द्वितीय विश्वयुद्ध परठारु 1991 पर्यंत unless and until Russia disintegrated, there was bipolarity, there was ideological confrontation, there was first Cold War, second Cold War. So, we kept away from that, but only after 1991 when Russia disintegrated, 15 Russian states disintegrated, the first three Latvia, Lithuania, Estonia, they disintegrated, thereafter other Russian states disintegrated, thereby leading to total collapse of Moscow by August 1991, and the great historian Francis Fukuyama said there is end of ideology. Russia रो विलय सह से कहले विश्व रु गोटे मतवादर निश्चिन्न हो गला, मतवादर समाप्त हो गला, ताहा कम्युनिज्म. But we have to also be mindful that in China we have communism is there, in North Korea there is communism, you have in Cuba there is communism. So, mere fall of communism as a mighty empire in Russia does not sound the death knell of all communisms lying across the states of the world. So, here what occurs after 1991, you find the comprehensive test ban treaty. When America's president was William Jefferson Clinton alias Bill Clinton, he was very much in support of comprehensive test ban treaty or CTBT. जो जो राष्ट्र पाखरे तांकर पारमाणविक अस्त्र अच्छी, अन्यान्य अस्त्र अच्छी, से ताकू परीक्षण करने पाई निषिद्ध करागला। भारत आज पर्यंत ताकू स्वाक्षर करूनाही, डबिंग इट आज डिस्क्रिमिनेटरी. अनदर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. कारण 1968 मसीह जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आसिला, by that time we had only 5 declared nuclear powers, because America got nuclear in 1945
with the Hiroshima Nagasaki experiment. Although America had been successful in nuclear technology by 1942 in Manhattan Project, then Russia got nuclearized. Thereafter you have France, England, China. Then India did not lag behind. By 1974 May, we experimented our first nuclear device, although that was unsuccessful in Rajasthan Pokhran, that is called Pokhran 1, when Indira Gandhi was the then Prime Minister with Jaswant Rao Balwant Rao Chauhan was the Defence Minister. Further in 1998, that is May 11 and 13, we exploded or conducted 5 nuclear explosions in Rajasthan Pokhran, that is called Laughing Buddha, Buddha Purnima re hoitibaru, that is nuclear Pokhran test 2. So, that recognized India as a declared nuclear power, and only 14 days after, on 27th May 1998, in Chagai Hill of Pakistan, Pakistan exploded its nuclear device under the nuclear scientist Abdul Qadir Khan. It was a tit for tat, because when India is getting nuclearized, Pakistan will not lag behind, the dead enemy, arch enemy of India and its neighboring country. Therefore, India until now 2021 is not a signatory to this nuclear non-proliferation treaty, because India says the entire world is beset with nuclear powers, nuclear threats. So, if India goes to experiment, then what is the fault with it? The treaty tries to put a cap on nuclear testing of India. Even India does not rely the America's threat or America's authority regarding its nuclear power. Rather, India says it is conducting nuclear research for its own sake, and India's nuclear power is meant for that is common minimum deterrence. So, here India opposes all discriminatory policies and treaties like nuclear non-proliferation treaty and comprehensive test ban treaty. Then principle of Panchsheel, it is another principal feature of India's foreign policy. Panchsheel or Panchoti principle jahaku kuha jaye, Panchsheel niti. It was signed between the Chinese Premier Chow En-lai and India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, and the founding stone of this Panchsheel was laid on 29th May 1954 at Bandung in Indonesia. Indonesia Bandung thare ehar ei jo Panchsheel Rajinama principle आरंभ होइतिला एवं साइन होइतिला. These 5 principles बा पांचोटी नीति आमको कही दिए बा सूचई दिए पांचोटी मित्र बा सुसंपर्क स्थापन करुथिबा राष्ट्र राष्ट्र मध्यरे एई भली एक प्रिंसिपल व्हिच इज रिगार्डेड बाय इंडिया एज ए पॉजिटिव वे टू पीस हार्मोनी फ्रेंडशिप अगेंस्ट आर्मामेंट रेस एंड म्यूचुअल हॉस्टिलिटीज बिटवीन नेशंस. राष्ट्र राष्ट्र मध्यरे विद्वेष जहाँ सृष्टि करुच्ची ता विरुद्ध रे एवं अस्त्र प्रतियोगिता विरुद्ध रे यह कार्य करे. द एग्रीमेंट वाज साइंड इन बांदुंग वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ जावा इंडोनेशिया बिटवीन द Chinese Premier Chow En-lai and Nehru. These 5 principles are mutual respect for each other's territorial integrity, पारस्परिक भौगोलिक अखंडता प्रति एवं सार्वभौमता प्रति पारस्परिक संपर्क रहिबो. भारत चाइनार भौगोलिक अखंडता को सम्मान करिबो, चाइनार सार्वभौम अधिकार को मध्य सम्मान करिबो. तदनुसारे चाइना मध्य भारत को सम्मान करिबो, किंतु ताहा आज पर्यंत देखा जाई नाही. नॉन आग्रेसन, केही काहा विरुद्ध रे आग्रेसन बा आक्रमण करिबे नाही. नॉन इंटरवेंशन इन ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स, कौनसी राष्ट्र बा भारत चाइनार घरोई व्यापार रे हस्तक्षेप करिबो नाही, चाइना मध्य भारतर घरोई व्यापार रे हस्तक्षेप करिबो नाही. म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इक्वालिटी, एवं एथिरे कुहा जाउची भारत चाइना तांको भितरे पारस्परिक निजकू सुहेला बळी लाभ देला बळी सबु कार्य करिवे एवं परस्पर मध्यरे समानता केमिति रहिबो
से प्रसंग रे मध्य प्रयास करिवे एवं शेष रे कहिला पंचशील नीतिर शेष प्रिंसिपलिटी पंचम प्रिंसिपलिटी होउची नीतिटी पीसफुल कोएक्जिस्टेंस शांतिपूर्ण सहावस्थान अतएव भारत चाइना को कौनसी परिस्थिति रे अशांति सृष्टि करिबा पाई देबो नाही एवं चाइना एभली कार्य करिबो नाही जे भारतर आभ्यंतरीण विशृंखला बा अशांति सृष्टि होबो तदनुसारे भारत चाइना उभय शांतिपूर्ण सहावस्थान करिपारिबे एहा तिला पंचशील नीति भारत एवं चाइना मध्य स्वाक्षरित होइतिला एहा मध्य भारतर वैदेशिक नीतिर एक अंग अटे नेक्स्ट वन इज सपोर्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड भारतर वैदेशिक नीति मध्य मिलित जाति संघरे विश्वास करे विश्व शांति रे विश्वास करे यूनाइटेड नेशंस एज यू नो इट इज ए very large organization it is a confederation rather it is a confederation of sovereign states समस्त सार्वभौम राष्ट्रर यह हेउची एक संगठन मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठान which was founded in the year 1945 24th October मिलित जातिसंघ to avoid the scourges of war and to establish peace in the world because in the wake of Second World War after the nuclear havoc created by America on 6th and 9th August by just exploding two nuclear devices Little Baby and Fat Man in Hiroshima and Nagasaki on 6th and 9th August, it was seen that what was the holocaust of nuclear weapons and mankind can never think of such nuclear holocaust. If we were to salvage or save or rescue the world, it is no other than peace. Therefore, all the civilized nations of the world thought of forming a world body that would be capable enough to protect mankind from the onslaughts, from the attacks of the war. Therefore, United Nations was created and it says since war is begotten in the mind of men, that it is in the mind of men that peace must be established. तेणु मनुष्य मुंडर जेहेतु युद्ध सृष्टि होउची सेही मनुष्य मुंडरे आमे शांति प्रतिष्ठा करिबा एहा मिलित जाति संघर उद्देश्य थिला तेणु अक्टोबर 24 1945 मसीह रे मिलित जाति संघ प्रतिष्ठानटी एक अंतरराष्ट्रीय अंतर्जातीय प्रतिष्ठान होउची विश्व रे युद्धर भयावहता दूर करी विश्व शांति प्रतिष्ठा करिबा पई एवं जहार मास्कट पिले अछि गोटे ग्लोब को ऑलिव गछर डाल घेरी ऑलिव गछ होउची शांतिर प्रतीक यूरोप राष्ट्र रे देखा जाए एवं ग्लोब को बेष्टि परिवेष्टित करी रही तामाने विश्व को शांति धरी रखी दैट इज द मास्कट और सिंबलिज्म सो यूएन सो इंडिया बिलीव्स इन द रोल ऑफ यूएन और यूएन as an international body. It is an active participant and supporter of world peace. So, whatever world peace drives are taken up by the United Nations, India also wholeheartedly supports it, and it has served on many occasions in heading various UN commissions. United Nations रो जेते गुडी commissions रही जो गुड़िक जो सबू देश को जाइकरी तार कार्य करुच्ची कौटी मानव अधिकार उल्लंघन होउची कौटी परमाणु युद्धर भय रही कौटी गण विध्वस्तकारी अस्त्र प्रयोग करा जाउची कौटी परिवेश संकट आसुची इत्यादि इत्यादि कार्य जेतेबेले मिलित जातिसंघ हस्तक्षेप करुच्ची सिक्यूरिटी काउंसिल जाउची यूनाइटेड नेशंस रो मिशन जाउची भारत मध्य ताकू सहयोग करुच्ची एवं भारत आंतर्जातिक शांति इंटरनेशनल पीस एंड सिक्यूरिटी सुरक्षा रे मध्य विश्वास करे इन मैटर्स ऑफ कलेक्टिव सिक्यूरिटी जेतेबेले सामूहिक सुरक्षा कथा आसुची मन करा जाऊ विश्व रे वर्तमान आतंकवाद एक विराट प्रोब्लेम बा विराट इश्यू आतंकवाद तालिबान आसी जिबा परे विश्व समुदाय समस्ते वर्तमान आतंकित होइचंती जे कौन हम तालिबान भविष्य पाकिस्तान आई एम सॉरी दिस अफगानिस्तान भविष्य अफगानिस्तान केवल एकाटिया हम नहीं कारण अफगानिस्तान हेबा सहित समग्र एशिया महादेश मध्य अशांत होई उठिबो कारण रिलीजियस फंडामेंटलिज्म व्हाट तालिबान प्रीचेस दिस आइडियोलॉजी ऑफ दिस supremacy of Sharia rule that would endanger world peace, and this has to be checked if the world peace is to be preserved.
So this is the need of hour. Then it also uses United Nations Forum for criticizing the policy of imperialism. भारत मध्य मिलित जातिसंघर विभिन्न फोरम को नहीं केमिति आमे उपनिवेशवाद को विरोध करि परिबा, साम्राज्यवाद को विरोध करि परिबा, विश्व रे जेउटी जेउटी भी एभली देखा जाउची कार्यक्रम ताकू भारत दृढ़ विरोध करुची। मिलित जातिसंघ माध्यम रे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बा जातिगत विद्वेष, जाति आधार रे गोटे रेस आधार रे आमे विरोध करुचे, कारण रेसिज्म इज ऑल्सो ए डेंजर टू वर्ल्ड पीस। जेमती हिटलर जर्मनी रे नाजीवाद करथिले, आरियानाइजेशन ऑफ जर्मन जूइश मान को हत्या करुथिले, दैट वाज ए रेसियन वार। जेमती साउथ अफ्रीका रे ब्लैक वर्सेस व्हाइट, अमेरिका रे ब्लैक वर्सेस व्हाइट, सो दीज आर द रेसिस्ट वार्स। तेणु ए रेसिज्म को भारत मध्य विरोध करे यूनाइटेड नेशंस रो माध्यम रे, एंड इट हैज बीन मेकिंग इफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिसआर्मामेंट। एवं विश्व रे निरस्त्रीकरण बा अस्त्र परिहार केमिति विश्व को विभिन्न अस्त्र यार भयावहता ठारू सुरक्षित रखिबा, भारत मध्य ए बाबद रे बहुत गुड़िए कार्य करिछि मिलित जातिसंघ सहयोग रे। Further to strengthen, with the view to further strengthen the UN, it has been pressing demand for permanent membership in the Security Council, which is supported by all the developing nations. एवं मिलित जातिसंघर मुठा को मजबूत करबा पई भारत दीर्घ दिन हबो तार स्थायी सभ्य पद सिक्यूरिटी काउंसिल बा सुरक्षा परिषद जार परमानेंट 5 मेंबर्स रही, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यही सबू रशिया, ये 5टी देश को छाड़ी भारत कहूँ 15 को वृद्धि करा जाऊ। भारत को दक्षिण एसीय राष्ट्र अन्य एक बड़ बृहत्तम गणतंत्र विश्व रही निया जाऊ, एवं एथिरे भारत को परमानेंट सदस्य पद न दबारे चाइना प्रमुखतः दायी एवं किछि अंश रे अमेरिका मध्य चाहे नहीं, कारण साउथ एशिया रे भारतर यदि स्ट्रैटेजिक गुरुत्व बढ़ी जाए ताहले अमेरिका मध्य प्रभावित होबो तार वाणिज्य। देन सॉलिडारिटी विथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तृतीय विश्व राष्ट्र गुड़िक सहित भारतर गोटे बंधुत्वपूर्ण संपर्क। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर आफ्रो एशियन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एंड दिस concept is that first world, when there was Cold War, America and Russia, they constituted first world. Then all the industrially developed countries, especially Western European nations and to some extent Japan and South Korea, they constituted the second world because they never entered these power politics or power games. And all the remaining other nations from the continents, that is Africa, Asia and South America, they constituted the third world countries. They are economically poor, socially divided, politically not stable. So there are so many drawbacks with those countries, third world countries, and they were once upon a time colonized, they were imperialized, therefore they did not have enough democratic experience. So those third world countries, because after World War II and its conclusion, द्वितीय विश्वयुद्धर समाप्ति परे परे आमर विश्व रे एई जो तृतीय विश्वर राष्ट्र गुड़िक कालक्रमे धीरे धीरे स्वाधीनता पाइले। तेणु जेहेतु 1945 रे द्वितीय विश्वयुद्ध सरुची 47 मसीहा परठारु आमे देखुचे भारत परे परे अन्यान्य राष्ट्र धीरे धीरे स्वाधीन होउचंती। तेणु एमानकर गणतांत्रिक अभिज्ञता नाही, एमाने केमिति विकसित हेबे सेतिपई भारत मध्य जत्नवान एवं सेमानक सहित सहृदयता बंधुत्वपूर्ण संपर्क सेमानकर उन्नति पई भारत जत्नवान एवं सेमानकु दरकार पड़ले विभिन्न प्रकार साहाय्य भारत देई आसुची। It shares its concern with the countries of Afro-Asian Latin American continents in their socio-economic development in an era of globalization. तेणु जगतीकरण जुगरे सेमानंकर सामाजिक आर्थिक रिकन्स्ट्रक्शन पुनर्गठन केमिति हबो से बाबदरे मध्य भारत सेमानंकु भारत तार समर्थन देई आसुची। फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विथ ऑल कंट्रीज पर्टिकुलरली विथ नेबरिंग कंट्रीज, भारत मध्य तार पड़ोशी राष्ट्र सहित उत्तम संपर्क रखिबा सहित दूर दूरांत राष्ट्र सहित जेमती 1985 मसीह आमर राजीव गांधी इंदिरा गांधी निधन पर प्रधानमंत्री होउचंती, 86 मसीहा को आमर आसी जाउची
गोटे सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन गोटे दक्षिण एसीय 7टी राष्ट्र को नहीं वर्तमान अफगानिस्तान को मिसिकी 8टी राष्ट्र को लेकिन सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एवं धीरे धीरे आम दक्षिण एशिया भितर केमिति आमर सुसंपर्क रहिबो से प्रसंग रे मध्य गोटे नेतृत्व तेणु दे आर कॉल्ड द फ्रेंडशिप्स एंड रीजनल कोऑपरेशंस देन solidarity with third world countries. India's foreign policy stands for friendship with all other states and it sincerely believes in the principle of working for friendship with the countries on the basis of sovereign equality. So, the very purpose of India's foreign policy is that India respects the sovereign equality of nations, because in the Committee of Nations all nations irrespective of their geographical size, population strength, military might or any scientific advancement are equal. Therefore, we cannot say that America is the very powerful nation, but when in United Nations General Assembly you have one vote, America is also having one vote. So, each sovereign nation is a stakeholder in its national sphere as well as in an international arena. Therefore, the sovereign equality principle which India always reveres or respects, it never discriminates the nations on the ground that it is a poor nation, it is a very vibrant nation. So, these are the discriminatory treatments which India detests or India boycotts. Then on the basis of sovereign equality and without any discrimination on the basis of ideology, and ideology, polarization of ideology during World War II, we find Cold War started between America and Russia, and India tried to stay away from American hegemony as well as Russia's hegemony, and India supported NAM, non-aligned movement, because to remain aloof from the confrontation of the capitalist America and communist Russia. That was the India's conviction, and all other third world countries, as many as 119 countries joined the non-aligned movement, and it became a very bigger umbrella or bigger movement that led the world to a new direction. And except boycotting racist regimes, ଯେଉଁଠି भी पृथ्वी रे आमर वर्ण वैषम्य किछि देखा जाउची ताकू भारत विरोध करूची बा ताकू बॉयकट करूची. इट वर्क्स फॉर बोनोमस रिलेशंस, बंधुत्वपूर्ण संपर्क with all other countries basing on the principle of पंचशील and non-alignment. भारत जेहेतु पंचशील प्रिंसिपल रे विश्वास करे, जहाँ पंडित नेहरू एवं चावनलाल मध्य स्वाक्षरित होइतिला, जहाँ को आधार करी पंडित नेहरू खुशी रे गदगद होई भारत रे कहिथिले हिंदू चीना भाई भाई, किंतु 1962 मसीहा चाइना आक्रमण परे पंचशीलर गुरुत्व आउ एते रहिला नाही. ताहा आमे भारत चाइना संपर्क पड़िला बेले पढ़िबा. एवं ए पंचशील प्रिंसिपल जेहेतु 5टी आदर्शगत नीति को नहीं तैयारी होईची, सेहा होची भारतर वैदेशिक नीतिर एक मूलाधार. एवं भारतर अन्य प्रिंसिपल टी होची दैट इज नॉन अलाइनमेंट बा गोष्ठी निरपेक्षता. एवं वर्तमान यार बेसी प्रासंगिकता नहीं, कारण विश्व रे वर्तमान मतवाद जेहेतु आउ रशियार भय अमेरिका को नहीं, कम्युनिस्ट रशिया नहीं, दिस नॉन अलाइन मूवमेंट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस at modern times. But that was the time until 1991 that NAM was a very great force which commanded respect across the globe, because it stood for third world solidarity. तृतीय विश्व राष्ट्र मानकर गोटे एकता पाई ताहा एक बलिष्ठ पाचिरी भली छिड़ा होइतिला, एवं ता रशिया को समर्थन करुनथिला कि अमेरिका को करुनथिला. तेणु यह एक स्वतंत्र गोटे नुआ दिग बा दिशा बोली अभिहित होउतिला. देन इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. भारतर वैदेशिक नीति प्रणयन रे भारत तार निजस्व
कार्य निजे जारी करि थाए बिकॉज इंडिया does not come under the influence of any other country because India takes its decision independently. We have to remember the case that in Indo-US nuclear deal which was signed by UPA government with that of America in Maharashtra, Jaipur, there was a power plant, nuclear power plant established by TEPCO company of America, and after the installation of this power plant, the American company refused to grant civic न्यूक्लियर लायबिलिटी जदि कौन दुर्घटना हुए ताले अमेरिका कंपनी कहला आमे किछि दायी रहिबु नाही सेथुरु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सपोर्ट विड्रॉ कला एवं शेष में नरेंद्र मोदी सरकार आसिला परे अमेरिका बाराक हुसैन ओबामा तांकर तीनोटी बड़ बड़ कंपनी आनी सेही प्रोग्राम रे पुणी राजी हेले मोर कहबार उद्देश्य होउची दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इंडिया कैन नेवर कम अंडर द प्रेशर ऑफ एनी अदर कंट्री that can influence India's foreign policy. And we know that during Cold War we had NATO, North Atlantic Treaty Organization, जहाँ अमेरिका नेतृत्व थिला रशिया वार्सो पैक्ट, पोलैंड राजधानी वार्सो पैक्ट कम्युनिज्म को प्रोटेक्ट करबा पई थिला तेणु ए सब जिनिसर आउ रेलिवेंस नाही. In recognizing communist China soon after its birth, India was criticized by the US. चाइना को जिते बड़े 1949 चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सृष्टि होची सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ सेतुंग भारत को अमेरिका दृढ़ विरोध कला कारण भारत चाइना को समर्थन करतिला एवं भारत परे परे बांग्लादेश लिबरेशन रे भारत अमेरिका द्वारा समालोचित होईची तथापि भारत भ्रुक्षेप करी नाही. अफगान क्राइसिस रे, कोरियन क्राइसिस रे, वियतनाम क्राइसिस रे भारतर भूमिका विश्व रे प्रशंसित होईची एवं भारत एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पॉलिसी बा निजस्व एक स्वाधीन पारमाणविक नीति ग्रहण करिछि जहाको आमे कॉमन मिनिमम डेटरेंस कहूचे. भारत दुई दुईटी परीक्षण करिछि 1974 1998 रे पोखरान 1 पोखरान 2 बेली कहा जाए एवं अमेरिका जेते चाप पकईले भारत नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी से आज पर्यंत स्वाक्षर करिनाही एवं सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी 1995 से मध्य स्वाक्षर करूनाही. सेइंग दैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इट टिल्ट्स द पावर इन फेवर ऑफ ऑलरेडी द न्यूक्लियर हाव्स जो मानक पाखे न्यूक्लियर क्षमता अच्छी. वी डेस्परेटली वांट न्यूक्लियर पावर फॉर रिन्यूएबल सोर्स और अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी. भारत में जेहेतु बिजुली शक्तिर धीरे धीरे संकट आसूची आम पारमाणविक शक्ति रे आमर व्यवहार करूँ सदुपयोग करूँ. न्यूक्लियर पावर माने नुहे सब आम युद्ध करने प्रस्तुत रही. सो इट इज एन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पॉलिसी. इट स्टैंड्स फॉर द एंड ऑफ बोथ हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सपेंशन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स which is wrongly viewed by the permanent 5 members एवं भारत परमाणु अस्त्रर हॉराइजॉन्टल भूमि रे प्रचरी जिबा एवं वर्टिकल तळु ऊपर को उठला बळी दुई प्रकार प्रोलिफरेशन बा संप्रसारण को विरोध करे एवं भारत ग्लोबलाइजेशन रो जुगरे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो विभिन्न प्रशंसनीय कार्य को प्रशंसा करे एवं भारत मिलित जातिसंघ रो एक सदस्य. भारत पड़ोशी राष्ट्र सहित सुसंपर्क रखापी यथा सार्क आसियान ब्रिक्स एमान सहित उत्तम संपर्क स्थापन पर विश्वास करे. शेष में टू कनक्लूड as the largest democracy of the world, India is poised for becoming a developed state in near future as a huge market of South Asia in the era of globalization. The foreign policy of India mostly matters for other nations of the world because of its strategic political economic dynamics. India can never compromise with its national and geographical interest while maintaining foreign policy relations with other nations of the world. So, this is the view of India and India's foreign policy's basic features, because no nation can compromise with the basic features of its own, keeping in view its traditions, its history, its principles. So, with this we briefly conclude this basic features of India's foreign policy, and other two classes are to follow in near future. Thank you all.